132. Kirtinagar MLA has been very helpful in this regard. This division subsequently did a March 8, 2022 International Women's Day event at the Jawahar camp with women and girls of these adopted clusters talking about their needs and hopes from the university in presence of the Vice Chancellor and the Registrar of the university. Books on India's freedom movement and constitution were distributed among the community school-going children that day from the university. This division will soon have a mobile van which will organize digital literacy and legal awareness programs for the people in the adopted clusters. Talks are already on to adopt more clusters in the Kashmiri Gate area as well as in the villages near Gumanera. The kind of activities that this division intends to do is with the principle of social justice and inclusivity, where the purpose is for the university to reach the neighborhood as well as the adopted village, collaborate with government departments, industry, corporate enterprises, development practitioners, do certificate courses, do community walks, do Jano Apna Sanvidhan and legal aid clinics, as well as do entrepreneurial and leadership skill building training. Disseminating information and initiatives on and about the pandemic to a wider community outside of the university is an agenda led by the AUD Vice Chancellor. The university had taken several initiatives of its own, community of students, faculty, and teachers through the pandemic. At this moment, the university is actually running the booster dose to be taken by all its staff in one of the campuses of AUD at the Karampura campus. AUD faculty also has been continuously engaging with manifold implications of this global public health crisis through newspaper essays, being part of policy-based research initiatives, organizing lectures and panel discussions for students and others. The Outreach and Extension Division's contribution to this broader canvas was by organizing this faculty development program with the theme, Pandemic, Experiences and Implications. To know the kind of services provided by essential workers and discuss the lessons learned from a public health crisis in order to understand how that will in turn help generate future research and knowledge, contribute to long-term policy making, as well as bring forth the importance of community engagement and participation. With this as a background, the division, with leadership from the Vice Chancellor and relentless support from the Registrar, Dr. Nitin Malik, and his team in the administration, launched the FDP on the 28th of February and subsequently conducted 12 days with 2-hour sessions on Fridays and Saturdays over Zoom till the 23rd of April. Over this time, the participants had the opportunity of listening to 19 resource persons, some taking 2 hours and some 1-hour sessions. We have a brief of the different issues that were covered, like logistics and provisions, art and culture, health, mental health, sound therapy and yoga, education and research, religion and spirituality. While 143 had registered for the workshop for this faculty development program, 77 attended the sessions across 2 months, out of which 21 attended and submitted their assignments, and they will be given certificate of appreciation today. And the participants that we had ranged from these, universities and colleges across Delhi, of course, but across India. We had participants from Tamil Nadu, from Haryana, from Chhattisgarh, from Kolkata, and many more. And we are delighted that many of our participants have been able to join with us today. And we are extremely honored that some of our resource persons have also joined us today. And with a special invitation
to the OSD Directorate of Education, Government of Delhi. He and his team of mentor-teacher program has also come to this event. We are extremely grateful for all of you for being here. Some of the lessons learned and the themes that constantly came through in the FDP was human goodness and empathy towards fellow beings. And I think, I would like to go back to when our Vice Chancellor had actually delivered the inaugural lecture. She had mentioned interdependence as a concept. And I think that is something that actually came through in all the sessions that we did. Mind-body wellness was another running theme. Care and resilience was another. Crisis management strategies was another. Creative imagination of services to be rendered during the pandemic. Impetus to reach out to people in multiple ways. Need for more effective and reliable communication reaching to all sections of the society in any situation of crisis. Selfless service, volunteering, and building a collective which could give vital and spiritual sustenance to people, ensuring a larger well-being and faith in humankind. I think in some senses, we reached there through these discussions. We've put together some of the ways in which these sessions were happening. We want to also, together with our resource persons and our participants, we've had, in some sessions, we've had chairs from our own faculty in the university. They, with their own expertise, have actually engaged with the resource persons. So we also are very grateful for our faculty having extended their time to this program. So what do we do after this? After having done this FDP, the way forward, again, as per the initiatives and directions of the Vice Chancellor, there are plans to do at least two things immediately. Number one, publish a manual and call it Pandemic Services Rendered and Lessons for Future. This manual to be distributed among teachers in Delhi government schools for them to engage with students about this historic event that the world witnessed and ways in which crisis was tackled. This would also be extended to all participants and resource persons of the FDP for further dissemination to wherever these professionals come from. And to conduct a certificate course on care and crisis management for Delhi government school teachers. Of course, this is a plan that we have thought about. We'll have to make these discussions more formal. I would like to end by saying that this closing ceremony would not have been possible without the continuous work that the registrar, Dr. Nitin Malik, did throughout the program as well as towards the closing ceremony, who connected us with various senior government administrators to act as resource persons at the FDP. In fact, he has been the one who has been in regular conversation with our chief guest today. And it's an honor, sir, that we have amongst us a Padma awardee for the first time at Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi today. I would also like to mention various people from the university administration, from the IT division, from the Outreach and Extension Office, for all the hard work that they have done. And special thanks to AIC AUDF, who has given us this room to hold this event, despite the fact that they also have a scheduled program today. So thank you very much. None of this, one wants to reiterate, none of this would have been possible without the continuous encouragement and leadership that we received from the Vice Chancellor.
Thank you very much. We'll move over towards the felicitation of the chief guest. While we all know that Dr. Jitendra Singh Shanti is a Padma Shri awardee of 2021, he is the president of the Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, who have been engaged in the service of people long before the pandemic. It's actually an organization which exists since 1996. And through the pandemic, the service that they have rendered has been towards transporting COVID-19 patients to hospitals and caring and cremating for unclaimed bodies. And unclaimed bodies who are strangers to the organization. In the process, Dr. Shanti, his family, has undergone COVID-19 not once, but more than once, and yet their relentless service remained. He's been a two-time councillor from the Jhilmil ward. Shaheed Bhagat Singh Seva Dal has helped organizing constant service to the poor, and among other services, they do blood donation and ambulance services, and they have taken an important role during the pandemic. A round of applause for our chief guest and all the immense service that has happened during the pandemic. We would help him now. Along with Dr. Shanti ji, we today also have Dr. Jyotjeet Sabharwal. He is son of Dr. Shanti only, and he is the in charge of the disaster management cell and also following the footstep of his father. So he is also serving into the community. We welcome him also in this university. He has come all the way from studying after completing his studies in UK. Now he wants to serve back into the country, back into the homeland, to be as a serve to the community. A big applause for Dr. Jyotjeet. We move ahead with the program. We'll first begin by inviting Dr. Jyotjeet Sabharwal, Chairman of the Disaster Management Cell that has been set up by the organization, to share his thoughts with us. I think I'm too tall for this mic, so I have to just adjust its height here. I hope I am audible to all of you guys. Good evening, everyone. I'm so glad that I'm present here at the closing ceremony of the Faculty Development Program, Pandemic Experiences and Implications. So basically, my name is Dr. Jyotjeet.
I did my MSc in disaster management from London. I did my PhD in disaster management from France. And it was an incident that changed my life in 2015. I went to Nepal during an earthquake. It was a massive one. Several casualties were there. We picked up dead bodies, cremated them. And that struck my mind that if a developing country like Nepal has faced such a huge loss due to an earthquake, God forbid if it happens in India or the National Capital Territory, which already falls in the seismic zone 4, what is going to happen? Because we people sincerely lack a culture of disaster preparedness. And that is what I saw in Delhi during 2020 and 2021. So our organization, Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, we have been doing the exclusive work, the exclusive seva of cremating dead bodies with dignity, providing dignified last rites to the people who have died and abandoned by their families, abandoned by the government, abandoned by the administration. We go by a tagline कि अपने लिए तो जानवर भी करते हैं, इंसान वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके. I want to share my lessons that I have learned during the COVID with you guys. I am just 28. When COVID started, I was 26. My father, he started to provide funeral van service to carry dead bodies. He started cremating COVID dead bodies. That was a time when even the families were abandoning their relatives. So you name anybody with COVID, and there was this untouchability. No one knew what would happen the very next minute. Once it was declared there's a family which is COVID positive in a particular area or a community, and that was all. People were used to get completely cut off from the people. Patients dying at homes in quarantine, dead bodies rotting in homes for 3 days, 4 days. Very serious situation that we have seen. The lessons I have learned, a main feature of any state, it's its health service, it's its emergency service. But we have seen instances where for ambulances, if a patient has to be transported from one hospital to another, be it 5 kilometers, 10 kilometers, he was forced to pay rupees 1,80,000, 70,000, exorbitant amount of money just for patient transport. Why? Because there was this pandemic going on, and some people, they were opting for measures such as black marketing, which is a shameful thing that happened during COVID. Ambulances were not available. Hospital beds were not available. People were dying because of lack of oxygen. Can you imagine a city like Delhi, the national capital, the pride of India, where there is no ambulance for patient, where hospitals put up a signboard that no oxygen, no admission. That means people were left on their own.
to die. It was a very pathetic, and I must say, it is a very critical situation which people have gone through. There was no dead body management in Delhi. You guys know whom to call if there is any rivalry or a fight between two groups. You call police. If there is a patient, you call ambulance. But what happens when there is a dead body? Nobody knows whom to call if there is a death case. And that happened in Delhi. People used to call the government helplines, but the ambulance services refused to pick up the dead bodies. Think of small children with their parents' dead bodies at home, rotting for 2 days, 3 days. Nobody came to pick up those bodies. Helpless, abandoned. What a fear and frightful situation it was. But I am proud to say this, that where even the government did not came forward, the Shaheed Bhagat Singh Seva Dal stood up for such helpless people and provided dignified last rites. It is a very crucial subject, disaster management. It is a very crucial subject, dead body management. But I'm sorry to say the administration did not pay heed to such crucial subjects, more oftenly neglected, because we are a developing country. But everybody saw the situation that happened. I won't say it was a disaster, rather it was a massacre that happened. So the private hospitals, the government hospitals, no care was being offered to people. Once a patient went inside, God knew he would come back or not, and that happened. So people died of COVID, but they actually died of the mismanagement of the hospitals, which was a very, very serious and pathetic thing to remember. But yes, we are here to share the lessons learned from that disaster. I once read in an academic paper, I remember I was in London, I read a line in an academic journal that when there is a disaster, sometimes NGOs play the role of a government. So I used to wonder, how can the NGOs play the role of a government? Government is a very big thing. NGOs are very small entities. But I'm very proud to say that during the COVID, the government in Delhi could not provide dead body management service, but our NGO provided dead body management services. We acted as a role of government. The Shaheed Bhagat Singh Seva Dal played the role of government, offering dignified last rites for the dead bodies, which is a very major task, and for which the government bestowed my father with the Padma Shri Award, which is the 4th highest civilian award for cremating the dead bodies. I'm going towards my conclusion. See, we are the youth. I'm just 28. I could have gone for mass communication, finance, MBA, engineering, whatever. But what came to use during the COVID? Doctors, nurses, ambulance drivers, cremation ground workers. I'm proud that I chose disaster management as my career. Not only helped me progress, but it helped me contribute towards the help and support that I offered for my country, from my state, Delhi. I could be of use to people. I could be of help to people. My understanding of this disaster is that we should literally learn practical lessons.
for the generations to come, I think we need to bring a revolution of disaster preparedness. It is high time we should start taking disasters and disaster management seriously. It is high time we should develop a culture of disaster preparedness. See, this is the era, this is the century of disasters. You have seen various earthquakes, COVID pandemic. Now there is this war going on between Russia and Ukraine. We need a lot of disaster management workers. We need humanitarian workers. What would happen if everybody would go for MBA finance and MBA and such and such stuff and mass comm? It is high time we should opt for social work and disaster management because our country needs the youth to be channelized towards development and saving lives of people through the medium of disaster management. I think we should excel in the humanitarian services, the emergency services. Each one of us should know how to perform CPR. Each one of us should know how to lift a patient if you have no availability of stretchers. Each one of us should know how a dead body needs to be taken care of, to be tackled if there is any disaster. These are the basic things that one should know. We should all become community-based volunteers rather than leaving everything onto the government. Why would government do anything for you? I think by opting for disaster management, by opting for social work, seva, everybody of you can become Shahid-e-Azam Bhagat Singh. Everybody of you can become an asset to this nation. It is my humble request that we should become self-reliant when it comes to saving lives. We should become self-reliant when it becomes nearly impossible for the governments to help us because they don't have any resources. I think it would be of great help for all of us if we help each other instead of blaming the government and keeping high hopes from them, because they have no serious attitude towards disaster management. But the families that have suffered losses, the families that have lost their child, the children that have lost their parents, they know the meaning of disaster management. They know the meaning of what a hospital bed, what an oxygen cylinder is. Though it was very shameful, but that era, that time has showed us the importance of social work and disaster management, and that it is high time we should develop a culture of disaster preparedness. Like I just said, अपने लिए तो जानवर भी करता है, इंसान वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके. You should feel the pain of others, be of help to others. पूरी लाइफ में अगर आप किसी एक को भी हेल्प करोगे, एक बहुत satisfaction का feeling है. I'm just 28. I've cremated more than 1,600 dead bodies with my own hands. So people used to call me कि ये तो पागल हैं या क्या हैं, अपनी जान से खेल रहे हैं, लोगों को कोरोना फैला रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं. बट जिन लोगों ने उस टाइम गालियां दी, वो लोग आज तालियां बजा रहे हैं. जिस गवर्नमेंट ने उस समय सपोर्ट नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने पद्मश्री दे दिया. So when you begin with a revolution, you always have to face difficulties. But once you overcome them, you're going to lead with another example like Shahid Bhagat Singh Sevadal did. And at last, I'm very thankful that you guys called us here. And it was such a great time to interact with all of you. And I hope that you will all play a great role in developing a culture of disaster preparedness and become an asset to this nation. And
let me conclude by saying a शेर कि हम तो वो वृक्ष हैं जो जमाने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारो तो जलाने के काम आएंगे। भारत माता की जय। Thank you very much, Jeet Jodhji, for that sharing of experience, as well as telling us the importance of volunteerism, of service, of seva to the community. In some ways, seva has actually been a part of our philosophy. And the pandemic was an important juncture which rekindled that in various people's minds, hearts, and the way in which they connected with each other. In some ways, we got back, we kind of reclaimed the importance of being a community. We move to the reason in some ways that we are gathered here, to have the valedictory address of the Faculty Development Program, Pandemic Experiences and Implications, to be delivered. Sri Jitendra Singh Shanti ji. बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर अनुज सिंह लाथर जी, वाइस चांसलर, नितिन मलिक जी, रुकमणी जी, जोतजीत सिंह, डॉक्टर जोतजीत सिंह, बहुत ही सम्मानित स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑल स्टाफ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कहते हैं कि जीवन में किसी भी काम को छोटा मत समझिए आप, और अपनी लियाकत को बहुत बड़ा मत समझिए आप। बहुत बड़ी लियाकत वाले भी धराशायी हो जाते हैं, और एक छोटा सा इंसान कई बार बहुत बड़ा काम कर जाता है जो सोच भी नहीं सकते आप। और एक छोटा सा तिनका भी आपके जीवन को बदल सकता है। एक छोटी सी दुर्घटना और घटना भी आपके जीवन को बदल देती है। और कोई एक दृश्य हम कई बार देख लेते हैं और अपने नित्य क्रम को बदल देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ 1995 में इसी निगम बोध घाट पे हुआ था, जब मैंने किसी गरीब को अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए पैसे ना होने के कारण लोगों की जली हुई लकड़ियों के टुकड़े उठाकर डेड बॉडी को जलाते हुए देखा था। वो मेरे जीवन का बदलाव था। मेरे दोस्तों ने कहा कि शंटी जी, ये काम तो सरकार को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। मैंने कहा यार, राष्ट्रीय राजधानी में खड़े हैं हम, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं लोग, करोड़ों रुपए की कार में चलते हैं, करोड़ों रुपए की शादियों में लगाते हैं।
और उसी दिल्ली के अंदर एक आदमी के पास अपने बच्चे के दाह संस्कार के पैसे नहीं है, तो हम प्रशासन की तरफ मुंह उठा के को देखेंगे? हमारे घर में बिजली नहीं आती, हम इन्वर्टर लगाते हैं, पानी अच्छा नहीं है आरओ लगाते हैं, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। तो समाज में भी अगर कुछ करना है तो हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? तो पहला जब मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया शाहदरा में, वहां मैंने बोर्ड लगा दिया कि किसी को भी निशुल्क लकड़ी चाहिए डेड बॉडी के दाह संस्कार के लिए तो हम करवाएंगे। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया मेरे को, यार ये क्या काम शुरू कर दिया तुमने, लाशों का काम शुरू कर दिया। एक एक करके 17 शमशान घाट मैंने अडॉप्ट कर लिए। मेरे अपने परिवार के लोग ये कहने लगे कि ये तो कफन बेचता है, ये लाशों के काम में लगा हुआ है, मतलब बहुत बुरा बुरा सुनना पड़ता था। मेरी मिसिज ने कई बार शुरू में कहा कि फलाना बंदा ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, और कईयों ने तो ये भी कहा कि सरदार पागल हो गया है। तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग तो भगत सिंह को भी पागल ही तो कहते थे, उस पागल ने जो करके दिखा दिया तो आज उसको शहीद आजम कहते हैं। एक जुनून तो होना चाहिए ना काम करने के लिए, एक जज्बा होना चाहिए, और वो जुनून आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है। बता दूं मैं आपको, बस ईश्वर ने कृपा करी, मुझे लगा कि दाह संस्कार के बाद क्या करूं, तो मुझे लगा यार हॉस्पिटल में जब डेथ होती है नॉर्मल और घर लेके जाना है, हॉस्पिटल से सीधा तो कोई शमशान लेके ही नहीं जाता, वो तो कोविड में ही गए हैं, अदरवाइज तो पहले तो जो हमारी संस्कृति है तो कैसे लेके जाएंगे? मर्सिडीज कार में लेके जाएंगे क्या, टोयोटा में लेके जाएंगे क्या? तो उसको क्या चाहिए उस समय? एक फ्यूनरल वैन चाहिए उसको, जिसको हर्ष वैन भी कहते हैं। वो कहां से आएगी? ना प्रशासन दे रहा है, ना हॉस्पिटल दे रहा है। आज भी अपोलो में डेथ हो जाए किसी की, बिल कितना? 25 लाख रुपए। डेड बॉडी को घर कैसे लेके जाएंगे जी? अपनी गाड़ी लेके आइए, साफ हाथ खड़े कर देते हैं। और वहां जो खड़े हैं गाड़ी वाले, कोई 10,000 मांगता है, कोई 15,000 मांगता है। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में 1996 में आ गया था। मैंने एक एम्बुलेंस बनाई, 2 बनाई, करते करते जब तक कोविड आया मेरे पास 12 एम्बुलेंस डेड बॉडी वाली थी। सारे डीएम्स के मुझे फोन आने लगे, शंटी जी वो आप कितनी गाड़ियां दे सकते हैं? मैंने कहा मैं सोच के शाम को बताऊंगा। मेरे मेंबर्स, कुछ दोस्त मुझे कहने लगे शंटी जी पंगा मत लेना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैंने कहा एक बात बोलूं, 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की एज ए मिलिट्री, और बिना किसी सरकारी मदद के। अनु जी आज तक 27 साल में शहीद भगत सिंह सेवा दल ने ना दिल्ली सरकार से कोई फंड लिया, ना भारत सरकार से कोई फंड लिया, अपने दम पे, अपने दोस्तों के दम पे काम करते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई एनजीओ बनाते हैं तो पहला आपके ऊपर जो ग्रहण लगता है वो ये लगता है कि पैसे वैसे इकट्ठे कर रहे होंगे। हमने नहीं लिया किसी से पैसा, और ईश्वर ने कृपा करी, लाइन लगा दी गाड़ियों की, और हमने कहा कि बिल्कुल हम गाड़ियां देंगे। पहला पेंडेमिक आया, 1366 डेड बॉडी हमने कैरी करी और क्रीमेट करी। और दूसरे में तो कहर था जी, बहुत बड़ा कहर था जी। जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, 4 रिचुअल्स, कंधा देना, मुखाग्नि देना, अस्थियां उठाना और क्रिया करना, खत्म हो गया जी। किसने करा? किसी ने ना कंधा दिया, ना किसी ने अग्नि दी, ना किसी ने एशेज उठाई, और ना किसी ने क्रिया करी। और फिर भी कोई आत्मा वापस नहीं आई। नहीं तो कहते हैं ना कि मुर्दे का सिर दक्षिण की तरफ कर दो, अब शगन होता है, ऐसे कर दो नहीं तो अब शगन होता है, पंचक लगे हुए हैं फलाना। कोई नहीं आया। इसका मतलब है कि सारे कर्म कांड हैं, हम असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन इस कोविड ने हमें जीना सिखाया। इस कोविड ने हमें खून का और पानी के रंग का फर्क बताया। गुरबानी में लिखा है ना, जगत में झूठी देखी प्रीत,
अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। स्पष्ट लिखा है, 500 साल पहले लिखा है कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहो दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, कौन आवत मेरे। आप लोगों ने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन जो हमने देखा आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या देखा? हमने देखा कि लाश बाप की पड़ी है, लाश मां की पड़ी है, और वो बच्चे जिनके लिए पिता को कर्म करके, झूठ बोल के, चोरी करके पैसा लाते हैं कि अपने बच्चे के लिए मैंने घर बनाना है, छत बनानी है, सुख सुविधाएं देनी है, उन बच्चों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। उन बच्चों ने, किसी ने कहा मैं बीमार हूं, किसी ने कहा मुझे डर लगता है, लेकिन जब हम डेड बॉडी लेके चलते थे पैक करके, तो कहते थे अंकल जी दर्शन करने हैं। हम सोचते थे शायद दया आ गई है, और दर्शन करने के बहाने किसी ने बाप की मुंदरी उतारी, किसी ने मां की बालियां उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। ये प्रत्यक्ष देखा है हमने, अपनी आंखों से देखा है। 4-4 दिन लाशें घर पे सड़ी हैं। हम जो कहते हैं ना अपने सुख के लिए बच्चों को हमने अमेरिका भेज दिया, अब हुआ क्या? लॉकडाउन हो गया, अमेरिका वाले आ नहीं पाए। एक घर के अंदर मम्मी भी मर गई, पापा भी मर गए, जो नौकर थे वो भाग गए। एक बहू थी घर के अंदर, 4 दिन डेड बॉडी पड़ी रही द्वारका के अंदर। मुझे बहुत बड़े चैनल का फोन आया, शंटी जी यार कुछ करिए ना। एम्बुलेंस लेके गए, सैनिटाइज किया, ऊपर से नीचे लेके आए, लिफ्ट भी नहीं थी, ना कोई सोसाइटी थी पुरानी सी। और जब नीचे लेके चलने लगे तो बहन जी की आंखों में, जो बहू थी, हल्के से आंसू आए। तो एक मोहल्ले की माता जी ने कहा बेटा अब क्यों रो रही हो, अब तो सारा इंतजाम करा दिया। कहने लगी माता जी आंसू तो मेरे 4 दिन से सूख ही गए। ये तो समझ लीजिए कि मेरी श्रद्धा के आंसू कह लीजिए, खुशी के कर लीजिए, कि जहां सारी सरकार फेल हो गई, ये 2 सरदार काम आ गए और मेरे पापा की लाश लेके जा रहे हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वो लाशें घर के अंदर सड़ रही थी जी। कहां चले गए सारे रिचुअल्स? और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। सारे सब्जेक्ट घरे रह गए, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े फलाना फलाना। हाँ, डॉक्टर्स और नर्सेस और टेक्नीशियंस, इन्होंने एक भगवान का रोल अदा किया है, भगवान का। और उससे भी ज्यादा एक बात बोलूं आपको, जो आपने गौर नहीं करी होगी। सुबह 5 बजे उस कोविड में भी हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी आके नालियां साफ कर रहे होते थे। कितना बड़ा रोल है सोचिए। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को गीले पे नहीं सोने देती है, खुद सोती है, वो बेचारे कोविड में आके वहां पे सेवा कर रहे थे। मुझे कई बार लगा कि यार वाकई में श्रद्धा के पात्र हैं कि बेचारे अपना घर छोड़ के आए हैं। ये सब कुछ हमने कोविड में देखा, और ईश्वर ने शक्ति दी। एक ड्राइवर मेरा शहीद हो गया उसमें, और उस भरी कोविड में मेरा जो पीक डेज थे वो थे 26 अप्रैल, आज शायद 29 है, 3 दिन पहले सालाना हुआ है उसका, समझ लीजिए। आज ही एनडीटीवी पे एक स्टोरी बन रही है, आज रात को 8 बजे आएगी, अब देखिएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में। और उस स्टोरी में पूछा गया, उन्होंने मेरे से पूछा उन्होंने कि शंटी जी आपने क्या देखा उसमें। मैंने कहा जी जो सारी जिंदगी ना देखा था ना देखेंगे, वो कहर देखा। 26 अप्रैल को मैंने 196 डेड बॉडी क्रेमेट कराई है, 196 एक दिन के अंदर। आप सोचिए कितनी होती है, कहां से शुरू होती होंगी, कहां खत्म होती होंगी, वो कितनी वेटिंग चलती होगी। संस्कार करने वाले लोग भी कम पड़ गए, हम अपने हाथों से कर रहे हैं। समझ नहीं आया जी उसमें क्या हुआ है। वो 22 दिन मैं भूल नहीं सकता, जब मैं घर नहीं जा पाया, कभी एम्बुलेंस में लेट गए तो लेट गए, बैठे हैं तो बातें करते जा रहे हैं, ना खाना खाया, ना पता नहीं क्या हुआ जी। लेकिन जो कहर देखा जी, कि 12 साल का बच्चा पापा की लाश लेके आ रहा है। अच्छा, कहीं तो मैं भूल ही गया, सच्ची बोलूं, अभी 6 दिन पहले एक मुझे लिली पंत मैडम का फोन आया इंदिरापुरम से, कि मैं कैम्ब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल हूं शंटी जी, आपका और मेरा वो रिश्ता है जिसको मैं नाम नहीं दे पाई कोई अभी तक। ये बात उन्होंने कही, मेरे से चाहे बड़े होंगे वो। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं।
तो कहने लगे शंटी जी डीआरडी हॉस्पिटल मिलिट्री में मेरे बेटा 29 साल का एडमिट था, मेरे पति एडमिट थे और मैं एडमिट थी, छोटा बेटा भी एडमिट था और 29 साल के बेटे की डेथ हो गई थी और 1.5 दिन बॉडी पड़ी रही कि आगे लेके कौन जाए, हम सब कोविड में हैं। फिर मैंने आपको फोन किया था तो आपने कहा था यहां ले आओ मैं करा दूंगा, मैं लेके आई। फिर मेरे दिमाग में सारा नजारा आ गया, मैंने कहा फो ये तो बहन जी हैं। मैंने कहा बहन जी इससे ज्यादा मैं बताऊं क्या हुआ था आपके साथ? कहते क्या? मैंने कहा जिस एम्बुलेंस में लाए थे उसने 40,000 रुपए मांगा था आपसे, 40,000 रुपीज 10 किलोमीटर के। कहने लगी भाई मेरे इससे भी ज्यादा और सुन लो, हॉस्पिटल से डेड बॉडी उठा के एम्बुलेंस में रखने का मैंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। इतना बड़ा कहर। उस बहन को मेरी याद आई, मैं उनके घर गया 3 दिन पहले और सारे समाज के सामने उसने जो अल्फाज कहे मैं उसको यहां बयान नहीं कर सकता कि आज मेरे उस धर्म का भाई आया है, इसने उस समय वो धर्म निभाया जो मेरे सके भाइयों को या मेरे बेटे को या मेरे पति को निभाना चाहिए था, लेकिन कुछ बीमार थे, कुछ आ नहीं सके, और जो इसने कर दिया मेरे भाई ने मेरे साथ, बस मैं बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने बोला, मेरी बहन ने। और कल मैंने वीडियो वो डाली भी है, मैंने शायद कॉपी भी भेजी है आपको, आज बहुत वायरल हो रही है वो दिल्ली के अंदर। बाकी वो कहर था जी। इसलिए ईश्वर ने हमारे को मौका दिया। रात के 2:30 बजे मैं संस्कार करा रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आता है कि शंटी जी आपको हम टीवी पे देख रहे हैं, सारा देश आपको देख रहा है और सारा देश आपके साथ है। इतनी बड़ी बात एक प्रधानमंत्री जी कह दें, ये बहुत बड़ी बात है। उपराष्ट्रपति जी का फोन आया मुझे, अक्षय कुमार जी का फोन आया कि शंटी जी मैं तो देख रहा वहां सानू भी सेवा दसो तुसी कोई, वो चैरिटी करते रहते अक्षय कुमार जी। तो मैंने कहा जी आप एक एम्बुलेंस भेज दीजिए हमें एडवांस वाली। अक्षय जी ने 2 एम्बुलेंस भेज दी एक की जगह। कहते शंटी जी मैं थोड़ा ना लगा वहां। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मुझे फोन आए, एक्टर्स के, डायरेक्टर के, सबके। लेकिन उससे क्या हुआ, हौसला बढ़ा। यहाँ के बहुत धार्मिक स्थल, बड़े बड़े धार्मिक स्थल कि हमने पूजा कर रहे हैं, किसी ने कहा हम नमाज अदा कर रहे हैं। अरब कंट्री से एक बहन जी फोन करती हैं कि शंटी जी हम आपको फेसबुक पे देख रहे हैं और आज हमने मस्जिद में सारी बहनों ने इकट्ठे होकर दुआ करी है कि अल्लाह ताला आपको शक्ति दे और आप इस तरीके से सेवा करते रहे। उन दुआओं से, उन ब्लेसिंग से हम वो सेवा कर पाए। और जब मुझे फोन आता था कि शंटी जी आप कहर के अंदर खड़े होकर कैसे संस्कार कर रहे हैं, तो मैं एक ही जवाब देता था कि हमारी गुरबाणी में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि दे शिवा बरमोहे है शुभ कर्मन ते कब हो न डरो, न डरो अरस्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और इससे भी बड़ी बात कि मेरे बेटे जोतजीत ने, जो लंदन से पढ़ के आया है, डिजास्टर का मास्टर है, अपनी माँ को कहा कि पापा वहां अकेले हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ शमशान में। तो अक्सर माँ घर से निकलने नहीं दे रही थी, पत्नी पति को नहीं निकलने दे रही थी, माँ बेटे को नहीं, उस कोविड में। लेकिन जो उन्होंने कहा कि बेटा लोग घरों में बैठ के भी तो जा ही रहे हैं, अगर कुछ सेवा करके कोई जाएगा तो जो प्राउड हमको होगा और पूरे देश को होगा, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तू जा बेटा किसी भी तरीके से। तो मुझे शहीद भगत सिंह की माँ की याद आ गई कि फांसी से 1 दिन पहले जेल में जाके उन्होंने कहा कि भगत मैं तेरा दिल छोटा करने नहीं आई हूं, मैं तेरा दिल बड़ा करने आई हूं, तुझे कहने आई हूं कि अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्मों के समान होता है। वो भगत की माँ थी, वो फर्ज निभाया मेरी मिसिज ने, जोत की माँ ने, और सारा परिवार लग गया। 2-2 बार हम कोविड में गए, डेथ बेड पे भी गए, फिर वापस आ गए, लेकिन ईश्वर ने शक्ति दी, आप सबकी ब्लेसिंग थी। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति जी ने बुला के मुझे पद्म श्री दिया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज देशों विदेशों से मुझे इनविटेशन आते हैं। अभी 8 और 9 तारीख को मैं जा रहा हूं, हमारे जो ब्रह्म कुमारीज का सबसे बड़ा सेंटर है माउंट आबू, 2 दिन मेरा वहां लेक्चर है। कोई हिंदुस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा कॉलेज, ऐसा धार्मिक स्थल इतना मान देते हैं, मैं बता नहीं सकता लोगों को। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहता हूं जी, आपको भी कह के जा रहा हूं कि प्रशासन और सरकारों पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, अपना इंतजाम खुद कीजिए। जैसे मैंने बताया इन्वर्टर, आरओ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते ना, तो आगे के लिए भी तैयार हो जाइए। आप भी अपने घरों के अंदर एक-एक कंसंट्रेटर रख सकते हैं, एक-एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रख सकते हैं,
और अपनी कमाई का कोई ना कोई हिस्सा एक, अब तो अकल आ गई होगी लोगों को कि बच्चों के लिए करते रहे, समाज के लिए भी करा कुछ, लेकिन अब जो जरूरत है कोविड के अंदर, तो ऐसा आप भी अच्छे पैसे को अच्छी जगह लगाइए। और आखिर में एक बात और कहूंगा कि जहां इतना अच्छा काम एनजीओ ने किया, धार्मिक संस्थाओं ने किया, कोई लंगर बांट रहा है, कोई ऑक्सीजन बांट रहा है, लेकिन एक तबका और था हमारे देश में, इसको मत भूलना कभी भी आप, जो 2000 का इंजेक्शन 2 लाख रुपए का बेच रहे थे। वो कोई गरीब लोग नहीं थे, सब पैसे वाले थे, वो अमीर थे, वो ब्लैक मेलर थे, जिन्होंने मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अपील की कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में कानून है कि मिठाई के साथ डब्बा तोड़ो तो जेल होती है, बहुत अच्छा करें, लेकिन ऐसे कहर के अंदर, इतने बड़े पैंडेमिक के अंदर, जिन लोगों ने मानवता को नोचा है, जिन लोगों ने बिल न होने के कारण लोगों की लाशें नहीं दी, जिन्होंने पेशेंट को भी छोड़ा, ऐसे सभी हॉस्पिटल का ऑडिट कराया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर एफआईआर हो, और छोटे मोटे कानून के अंदर भी एनएसए हो, नशा सिक्योरिटी एक्ट में, ताकि उनको पता लगे कि इतने बुरे समय में देश के साथ उन्होंने क्या किया, मानवता के साथ क्या किया। इसके लिए मैं आपको कहूंगा, इस वक्त को मत भूलिएगा। आप सबका मैंने बहुत समय लिया। मैं मैडम का, अनु मैडम का, मलिक साहब का, रुकमनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतने अच्छे क्राउड में और इतने अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर बुला के बोलने का आपने मौका दिया। ईश्वर ने चाहा तो कभी भी आपके किसी भी कार्यक्रम में मैं आता रहूंगा। मेरा बेटा ज्योतजीत भी आपको समय समय पर आकर डिजास्टर के बारे में और पैंडेमिक के बारे में अच्छे अच्छे अपनी सलाह देता रहेगा। मैं आपका बहुत ऋणी हूं कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने इतना मान और सम्मान दिया। और अंत में यही कहूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। धन्यवाद। I am so touched and moved. Let's all stand up and give standing ovation to the son of our country. One becomes speechless after hearing these experiences, but also one would want to believe that there is a lot of learning and there is a lot of inspiration that as students they can derive from hearing somebody like Dr. Shanti ji.
Thank you very much for spending your time, your valuable time with us at this university. During the faculty development program, we had resource persons from all across India and also outside of India. Some of them are here with us. I would also like to mention institutions that actually got attached to us through the faculty development program. So we actually had the ADG of the Postal Department of Government of India, Mr. A.K. Poddar, IPOS, who had delivered one of the first lectures during the faculty development program, talking about the importance and the uniqueness of the red postal van that can actually act as essential services during the pandemic. We had Mr. Manoj Jain from Madhya Pradesh joining us, who is part of the District Institute of Education and Training in Harda in Madhya Pradesh. We had Dr. Shalini Singh, who is the Director, National Institute of Cancer Prevention and Research, Indian Council of Medical Research, talking about the ICMR initiatives during the faculty development program. We had the DIG Operation and Training Indo-Tibetan Border Force, Brigadier Pranav Jaiswal, talking about his initiatives in rural areas of northeastern India to our participants. We had faculty from National School of Drama. We had senior manager from Springer Publishing. We had NGO representations from Women's Organization and Disability Rights Organization. We had representation from nurses and doctors of different hospitals, government hospitals in Delhi. And we also had the head of product program and design from Big Basket. We had wellness managers and yoga instructors joining us and talking about the importance of all of this. We've tried to list all of them through the names and their institutional attachment in these 3 slides. We are extremely honored that today we have with us 2 resource persons from the faculty development program. Dr. Naresh Raj, Directorate of Education, Government of India, Government of NCT. And we also have Mr. Birbhadra Das, President, ISKCON Temple of Gurugram. Ram Bhadra Das, I'm so sorry, extreme apologies. We would like to ask Dr. Naresh to speak a few words about your experiences of being a resource person at this faculty development. हेलो, नमस्कार आप सभी को। प्रोफेसर अनुज सिंह, वाइस चांसलर मैम, डॉक्टर संटी जी, जिनका कि हम मानवता के लिए आज इतना शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना काम किया। प्रोफेसर रुक्मणी सेन, डायरेक्टर ऑफ ओई प्रोग्राम, डॉक्टर नितिन जी, रजिस्ट्रार ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर जीत जोत सिंह जी। देखिए, जैसा कि अभी दोनों ही डॉक्टर साहब ने इतना ब्रीफ में बताया कि ये पैंडेमिक हमें बहुत कुछ दर्द देके गया है, लेकिन सिखा के भी गया है। इस पैंडेमिक ने एक चीज हमें बड़ी खूबसूरती से सिखाई कि मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी व्यक्ति अलग अलग जगह पर ये महसूस कर रहे थे कि इस पैंडेमिक, जैसे कि इतना ब्रीफ में बता दिया, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, उसी तरह टीचर्स, थ्रू आउट नर्सरी टू यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स ने जो पैंडेमिक में काम किया है, अपने बच्चों को गाइड कर कर,
अपने एकेडमिक स्टाफ को गाइड कर कर और जहां जहां उनकी ड्यूटीज लगी उनको निभाकर। तो मैं उन सबको सलूट करना चाहूंगा जिन्होंने इस पैंडेमिक में मानवता को जीवित रखा। मैं अगर कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स की ड्यूटी फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एयरपोर्ट ड्यूटीज को लेकर सब जगह लगी, और जो माइग्रेंट पीपल्स जा रहे थे अपने अपने गांवों को, अपने अपने नेटिव विलेजेस को, उनको शहर से गांव तक की ट्रेन में बैठाना, उनको पहुंचाना, ये सब हमारे टीचर्स के द्वारा किया गया, उन लोगों के द्वारा किया, और उनको मानवता के रूप में लिया। और ड्यूटी नहीं कहूंगा इसको मैं, ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर बेशक मिला हमें, लेकिन वो एक फील आ रहा था कहीं ना कहीं देशभक्ति का, कि परमात्मा ने हमें इस लायक समझा है कि हम मानवता के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जब मेरी सबसे पहले ड्यूटी मेरी एयरपोर्ट पे लगी, मैं उस सबसे पहले बेस्ट में था, फर्स्ट टीचर मैं था जब मेरी वहां एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी, और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरे को नोडल ऑफिसर बनाया गया जब, तो उस 3 दिन तक हमें यह होश नहीं था कि हमें पानी पीना है। जब पहली फ्लाइट वहां से वंदे भारत मातरम से आती है और उनके चेहरे हमने पढ़े अपने भारतवासियों के, तो एक भय, एक डर उनके चेहरों पे था। लेकिन खुशी इस बात की थी हम उस मातृभूमि पे आ गए हैं जहां हमें अब अपनापन मिलेगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं संभालना, और सबसे बड़ा काम जो हमारे टीचर समुदाय ने किया, शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया, कि शिक्षा को नहीं रुकने देना है, शिक्षा जीवंत रहेगी। एक एक बच्चे के कनेक्ट को बना के रखना, कि बच्चा अगर घर बैठ गया इस साल 2 साल जब तक ये पैंडेमिक चला, तो शिक्षा कितनी अधूरी रह जाएगी। तो शिक्षा को जीवित रखने में हर एक पहले सबसे पहले बड़े छोटे पैमाने पे, क्योंकि हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा नर्सरी से लेकर 12वीं तक का बच्चा है, और उसमें हमारे छोटे बच्चे जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं थे उनको व्हाट्सएप ग्रुप तक जोड़ना, और उनको वर्कशीट पहुंचाना, और सभी पे अगर फोन नहीं है तो स्कूलों में भी व्यवस्था करना कि वो वर्कशीट वो उनके पेरेंट्स या कोई साथी स्कूल से ले जाए और उसको भर के दे दे, उसका असेसमेंट टीचर कर देगा बच्चे का, बच्चे को एजुकेशन तक लेके जाएगा। इसके साथ साथ मेरे साथ को डिग्निटीज बैठी हैं, डॉक्टर बीपी पांडे जी, गौरव जी, डॉक्टर नील जी, मनु गुलाटी जी, बिम्पल आर्या जी, ये वो डिग्निटीज है जिनके लिए मैं चाहूंगा जिन्होंने अपने हर एक मौके पे ऐसा क्लैपिंग करके हम इनको करें, क्योंकि इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जब लंबी लंबी लाइनें होती थी उस लाइनों को मैनेज करा है, एक एक व्यक्ति को खाना मिले, उस चीज को देखा है। मन्नू जी बैठी हैं, गौरव जी बैठे हैं, डॉक्टर नील बैठे हैं, डॉक्टर पांडे जी बैठे हैं, जिन्होंने सोशल वर्क के रूप में जब नैपकिन्स, प्लीज मैं चाहूंगा ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग स्टैंड करें, और थैंक यू वेरी मच। और अंबेडकर यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि इन्होंने मेरे को मौका दिया ये प्रोग्राम बताने के लिए। जब मैं स्लाइड्स में दिखा रहा था तो वो चीजें थी, देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई जैसे संटी जी ने और डॉक्टर साहब ने शेयर करा, फोकस कुछ चीजों पे था, पहली बार आया 100 सालों में हमने ऐसा किसी ने देखा, कोई जीवित व्यक्ति यहाँ इस मंच में नहीं है कि हमने वो सब फील किया था। पहला अनुभव था, बड़ा खतरनाक अनुभव था, परमात्मा दोबारा ना लेके आए। खाने पे फोकस हो गया, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाना, कौन पहुंचाएगा, कैसे घर से निकलेंगी। तो इस टीम ने काम करा जिनको किसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, किसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं करा, जैसे कि संटी जी कह रहे थे, अपने से कलेक्शन करके हर एक स्कूलों में, क्योंकि वो खाना खाने वहां लेने आते थे, वहां सैनिटरी नैपकिन, सैनिटाइजर, मास्क, उन चीजों को प्रोवाइड करने का काम करा दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स और कुछ साथियों ने। तो मैं एक मानवता का भाव जो देख रहा हूं अध्यापक वर्ग में, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स, नर्सेज और दिल्ली पुलिस के लोग, साथ में ड्राइवर, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो लगातार जब हम पैसेंजर्स को भेजते थे, जब वहां से क्वारंटीन हम करते थे 7 दिन एयरपोर्ट से, तो वो कहते थे सर आज 7वां चक्कर है और पानी तक नहीं पिया है, तो आंखों में आंसू आते थे। ये फर्स्ट फेज की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब घर से लोग नहीं निकलते थे, घर से लोग नहीं निकलते थे उस समय की पैंडेमिक हो जाएगा। एक काम और शेयर करना चाहूंगा, संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा था कोविड का, लेकिन कुछ लोगों में डर नहीं था, लेकिन मैंने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करी अपने स्टूडेंट के माध्यम से, क्योंकि
पोस्टर चस्पा कर रहे थे दीवारों पे स्टार्टिंग में, उससे एक दिक्कत आ रही थी कि लोग बताने से डर रहे थे कि मेरे को कोविड आ गया है। मेरे दिमाग में आया कि इससे तो दिक्कत आ जाएगी, वो दुकान पे भी जाएगा, दूध भी लेने आएगा, अगर उसको वो डर रहा है कम्युनिटी में ये बताने के लिए कि मेरे को कोविड हो गया, जब उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं तो कि मतलब इसको कोविड हो गया है, कोविड हो गया है, अरे भाई उस फ्लैट में कोविड हो गया है, ऐसी सिचुएशन थी। मैंने अपने सोसाइटी में 175 मकान है वहां, मैंने कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ एक मेरे व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजना, उस लिस्ट को मैं आपके घर पे वो सामान पहुंचा दूंगा और किसी को कुछ नहीं पड़ेगा। और लोगों ने वो करना शुरू करा, करे पैसे ले लो, मैंने कहा सब आ जाएंगे पैसे, कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोग दे दिया करते थे। लेकिन इससे एक चीज मैसेज गया मेरे स्टूडेंट्स को, फिर जब मैंने बताया कि ये सर आपने बहुत अच्छा बताया, इससे हमें भी लगता था कि पैंडेमिक में हम दुकान पे कैसे जाएं, लेकिन हम इसलिए जाते थे, लोग हमसे भय खाते हैं और वो भय से अब हम रुक जाएंगे, हमें घर में, तो संक्रमण रोकने के लिए उपाय हमें ही खोजने पड़े। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहूंगा कि जिस भी समुदाय ने काम किया, बेहतर काम किया और हमें इसे जीवंत रखना चाहिए। एक गाना मेरे को अक्सर याद आता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जीत जमाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। We would also like to call Rambhadra ji up on stage for honoring him. We have with us also some of the participants who we are actually meeting for the first time. This entire faculty development program was such because it was enabled by the university IT division that we could do it through Zoom. And we had the inaugural session where a resource person had come, and the closing session is of course today, where we have so many of you gathered. We have some of the participants here today. We'll be distributing certificates to them, but that would be after we hear the special address from our Vice Chancellor. So we'll now hear the special address from our Vice Chancellor, Professor Anu Singh Lathir. Good evening, namaskar, pranam. कोई स्पेशल एड्रेस शंटी जी के एड्रेस के बाद बनता ही नहीं। ये समझना, ये फील करना, उन इमोशंस को जीना और फियरलेसली जो उन्होंने किया, मैं अंदर तक एक स्पिरिचुअल वेव और वो स्पिरिट फील कर रही हूँ। There were tears in my eyes while he was addressing all of you. कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत ही मुश्किल, करना बहुत ही मुश्किल। पेंडेमिक के टाइम में एज वाइस चांसलर बहुत सारे चैलेंजेस यूनिवर्सिटी में रहे। उन चैलेंजेस में फियर बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो फियर अपने आप को बचाने का मेजॉरिटी लोगों में मैंने देखा। एक भी केस अगर यूनिवर्सिटी में आता है तो सबसे पहले इस बात का शोर मचाया जाता है कि हम सेफ नहीं हैं। शंटी जी,
आपने आके ऐसे लोगों को बहुत छोटा दिखाया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, संत भी बनो तो सिपाही भी बनो। संत और सिपाही बनने की जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, वही इंसानियत को सस्टेन करती है, वही मानवता को सस्टेन करती है, वही इस समाज को सस्टेन करती है। तो जो स्पिरिचुअलिटी, जो मानवता शंटी जी ने दिखाई, उसके पीछे बहुत सारी उनकी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन जो उन्होंने अपने बच्चे में भी रखी। ज्योतमीत ने भी आगे काम शुरू किया है और अपने पिता को देख के उसने सीखा है और वो इसी डायरेक्शन में देश की सेवा करना चाहता है। तो मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि आज हमने ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में बुलाया है जिन्होंने हमें मानवता को जी करके, एग्जाम्पल सेट करके हमें बताया है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए फियरलेस होना सबसे जरूरी है। अगर हर चीज के लिए हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और डर डर के जिएंगे तो क्या जिएंगे। जैसे मैंने कहा कि आज के एड्रेस का ज्यादा मतलब इसलिए नहीं निकलता है कि जो हमने सुना उससे ऊपर कुछ सुनने की इच्छा भी नहीं है। एफडीपी अच्छे से हुआ, इनिशिएटिव हमने यूनिवर्सिटी ने लिया, हमने अपने कुछ हम्बल इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से भी मानवता के लिए लिए, पर वो बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स थे। हर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर एक ने पेंडेमिक के टाइम में आ करके सारा काम किया। हर समय वो यहाँ होते थे, एफिशिएंटली यूनिवर्सिटी को चलाया। हमने कभी भी यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग को बंद नहीं किया। तो जब वो लोग आते थे, उनमें से कई लोगों को इन्फेक्शन होता था और उनमें से बहुत लोग एडमिट भी हुए, हॉस्पिटलाइज भी हुए, परंतु जो स्पिरिट उनमें थी, जैसे ही वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करके वापस आते, वो वापस अपने काम पे आ जाते थे। उन सब वॉरियर्स को, वो सब वॉरियर्स जिन्होंने पेंडेमिक के टाइम में एयूडी फैमिली के लिए इतना जज्बा दिखाया, उनको सलाम। उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं एयूडी की फैमिली की तरफ से, जिन्होंने उस समय फियरलेस होके एयूडी फैमिली के लिए काम किया। और AUD family should be very thankful to all of them for showing that courage. Outreach और extension activities में हमने पेंडेमिक को पहले लिया। रुक्मिणी और मैंने बैठ के डिसाइड किया कि एक्सटेंशन वर्क में सबसे पहला क्या काम हमें करना चाहिए। तो हमने डिजाइन किया कि सबसे पहले हमें पेंडेमिक के ऊपर ही एक वर्कशॉप करनी चाहिए। हमने क्या लेसन सीखे और क्या नहीं सीखे, क्या हमने व्यवहार किया और क्या व्यवहार करना चाहिए था, कौन सी एजेंसीज थी जिन्होंने बहुत काम किया, और आने वाले समय में किसी भी तरह का पेंडेमिक, एपिडेमिक या कोई डिजास्टर होता है तो कौन सी एजेंसीज हैं जिन्होंने देश में इतना कार्य किया, और AUD एडमिनिस्ट्रेशन उनसे जुड़ना चाहेगी। हमारी आउटरीच एक्सटेंशन उन सबसे परमानेंट जुड़ना चाहेगी। इसी सोच के साथ हमने ये FDP शुरू किया था और बहुत हद तक हम शायद उस बात पे पहुंच भी पाए हैं। शंटी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों को छोटे ग्रुप्स में आकर के एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन की वर्कशॉप कीजिए और उन्हें बताएं कि ये जो स्पिरिट है किसी के लिए करने की, वो बातों से नहीं आती है, वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी से भी नहीं आती है, वो रिलीजन और धर्म से भी नहीं आती है, वो बड़ी बातें करने से भी नहीं आती है। वो कैसे आती है?
वो कैसे आती है, इन बच्चों को आप आके बताएं वो कैसे आती है। शंटी जी की इन्वॉल्वमेंट हमारे एयूडी में परमानेंट है। He has become part of our journey at AUD and an essential member of AUD now. So, as I said, that I am so moved, there is no special address beyond the address he has given today. For all the participants who participated, thank you all of you, all the resource persons who were here and who shared their experiences, thank you so much all of you. And keep in touch with us, keep in touch with our students. Do give us some of your plans which you think as a community development program we can introduce in AUD. God bless all of you. Shanti ji, आपको बहुत बहुत नमन और ज्योतिर्मीत को बहुत blessings. जीवन में आप बहुत अच्छा करें और हमारे बच्चों को भी राह दिखाएं. Thank you very much. With those words of inspiration, thank you very much, ma'am, for continuous encouragement and also, by the end of one program, new set of programs are already mentioned. So to give us the direction towards the new set of programs as well. Thank you very much. We'll take 1 minute to have all the participants of the FDP to just come here and we could just have a photograph. The FDP participants. Nirja ji, please aiye. Jeet ji, Tina, Venu, Khushbu, Rituparna, Disha, Arshi, Trivedi ji. Disha. Venu, please come. Sorry. We have a photo. Please come this side. We have participants from AUT and participants from everybody. I'll stand this. Kritika. I'd like to invite Kritika. Kritika, please. She was hiding. Can we also have Naresh ji and Rapat ji to come up on stage, please? Thank you, everybody. Thank you. We have the formal vote of thanks from Registrar Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, Dr. Nitin Malik, sir. समझ नहीं आ रहा कि वोट ऑफ थैंक्स दूं तो किसको दूं। आज जब ऐसे शख्सियत को अपने बीच में पाया जिन्होंने सर्विस टू सोसाइटी नहीं, सर्विस टू ह्यूमैनिटी दी है, जिनकी बातें सुनी थी और जो आज देखा तो पता चला कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक मनुष्य जो अपने ही परिवार में होता है
अपने ही परिवार के साथी को ऐसी दुखद घड़ी के अंदर में छोड़कर कि कोविड है, हम डरे हुए हैं, उसके अंदर में उसको अकेला छोड़ के उसके जो लास्ट राइट्स हैं डिग्निफाइड वे में वो भी ना करे, वो आज हमने सुना। तो वोट ऑफ थैंक्स देने का समझ नहीं आ रहा कि कहां हम जा रहे हैं, कहां गए थे इस कोविड में। लेकिन वहीं पे ऐसी आत्माएं, ऐसे शख्सियत हमारे बीच में जिन्होंने सर्विस टू सोसाइटी ना करी, उन्होंने किया सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो बड़े ही हृदय से इस डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर्वप्रथम जो आज हमारे बीच में श्रद्धेय पद्मश्री शंटी जी उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इनको फोन किया, इतने बिजी शेड्यूल, इतने, अभी भी इनको जाना है, अभी एनडीटीवी का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कहीं और इनको किसी एक सामाजिक कार्य, समाज के कार्य में ही जाना है। लेकिन जब मैंने इनको बोला तो उन्होंने बोला कि कहाँ आना है मुझे, तो मैंने कहा आपको स्टूडेंट्स के बीच में आना है, आपको टीचर्स के बीच में आना है। उन्होंने बोला आप डेट फिक्स करिए, मैं आ जाऊंगा, आप डेट दीजिए मुझे, कौन सी डेट में आना है, मैं आ जाऊंगा। तो सोचिए कितने सरल व्यक्ति हैं, और उसके लिए जो उन्होंने आज यहाँ आए, और ना अकेले ही नहीं आए, अपने साथ अपनी परंपरा, अपनी विरासत जो उन्होंने अपने पुत्र के अंदर में दी है, ज्योत के अंदर में ज्योति जलाते हुए उसको भी साथ लाए। और आपकी मैं बात सुन रहा था, आपने बोला कि हम एक वृक्ष हैं जो कभी सूख भी जाएंगे। ये वृक्ष सूख ही नहीं सकता, ऐसे वृक्ष सूख ही नहीं सकते जब वो समाज के अंदर में ऐसा कार्य करते हैं। ये तो चलते रहेंगे परंपरा के तरह से, एक के बाद एक। और दूसरी शंटी जी ने जो बात बोली, उसमें मैं जरूर एक चीज बोलना चाहता हूं। शंटी जी ने बोला कि वो कोविड का काल था, वो वक्त था, और यही दिन थे। मुझे भी याद है क्योंकि कल भी मैं 2 प्रेयर मीटिंग्स करके आया, आज भी एक प्रेयर मीटिंग थी, क्योंकि ये वक्त था जब मैक्सिमम डेथ्स हुई थी इसी टाइम में, 1 साल पहले। तो जैसे शंटी जी ने बोला कि पागलपन और जनून, तो जब सेकेंड वेव में हम लोग भी देखते थे टीवी के अंदर में, हम लोगों ने भी घर में बैठे बैठे देखा, तो मन में जुनून तो हमारे भी उठता था कि जाइए जाके थोड़ा समाज में कुछ कार्य करें, इसके अंदर में किसी की मदद करें। तो निकले भी शंटी जी, किया भी, जाके कुछ लोगों को कहीं खाना देना था तो वो भी दिया, किसी के घर में कोई दवाई पहुंचानी थी तो वो भी पहुंचाई। और हमारी तो माननीय कुलपति महोदय ने हमारी ड्यूटी ही लगा रखी थी। हमारी वाइस चांसलर ने फर्स्ट वेव से लेके सेकेंड वेव में हमारी ड्यूटी लगाई थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं ड्यूटी कि उनके भी दिल में यही था, वो खुद भी आती थी यूनिवर्सिटी के अंदर में, और हमारी ड्यूटी थी कि किसी को भी सिलेंडर की जरूरत हो, किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, आपके न्यूबलाइजर की जरूरत हो, आपको गाड़ी की जरूरत हो, तो आपको गाड़ी पहुंचवानी है वहां पे। और हम लोग कार्य कर रहे थे जो भी हमारे सीमित साधन थे। तो ऐसे कार्य में करते करते एक दिन अपने को समझ रहे थे कि हम भी कार्य कर रहे हैं, तो पता चला कि मेरे ही किसी दोस्त की मदर की डेथ हो गई, सेकेंड वेव था। तो पहुंचा, लेकिन जो दोस्त था उसको भी कोविड था, उसकी वाइफ को भी कोविड था, उसकी मदर को भी कोविड था। फिर भी वो लोग पीपीओ किट के अंदर में वो वहां पे शमशान में गए। तो जनून और पागलपंती की आपको मैं थोड़ी सी डिफरेंस जो बताना चाह रहा हूं कि जनून तो मेरे में भी आके बवाल मार रहा था कि मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं वो पागल नहीं था कि मैं शमशान के अंदर नहीं गया। तो जब तक जनून और पागलपन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक हम शंटी जी जैसे लोग नहीं बन सकते। अगर कोई ये बोलता है कि ये जनून और पागलपन है तो यही शायद मानवता है। शंटी जी, आपको इस अंबेडकर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से पुनः पुनः बहुत बहुत नमन। और आज आप जहां आए, और जैसे हमारी माननीय कुलपति महोदय जी ने भी बोला कि आपको आगे भी इस परिवार के ऊपर आते रहना है, और आगे भी आपको इसी तरीके से हमारे यहाँ के छात्राओं को और हमारे यहाँ के शिक्षकों को, कर्मचारियों को अपना एक्सपीरियंस, अपना मार्गदर्शन देना है कि कैसे हम भी किसी तरीके से समाज के अंदर में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रह सके और एक काम आ सके। ये फैकल्टी
डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2 महीने चला, 2 महीने बहुत मुश्किल काम है। और उसमें मेजरली जो मैं देख रहा हूं, जो प्रतिभागी रहे वो टीचर्स रहे, समाज से जुड़े लोग रहे। तो टीचर्स को 2 महीने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना, वो भी फ्राइडे सैटरडे को, वो भी 2-2 घंटे, कितने सब पार्टिसिपेंट्स ने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माननीय कुलपति महोदय का, जिन्होंने ये सोचा कि हम आउटरीच और एक्सटेंशन से इसको सबसे पहले पैंडेमिक के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसी को शेयर करें और एक दूसरे से हम उनसे कुछ निकाल के लाएं, सो दैट आगे के हमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट करना है उसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सिटी, एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और उन्होंने चुना हमारी डायरेक्टर आउटरीच एंड एक्सटेंशन और उनकी टीम को, उनके साथ विचार विमर्श किया और आज हम वैलिडिक्ट्री पे हैं ऑफ दिस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अंदर में जितने भी प्रतिभागियों ने, जितने रिसोर्स पर्संस ने, जितने सब ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया, सहभागिता की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी वो इस अंबेडकर विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े रहेंगे, ऐसी ही हम आशा करते हैं। और जैसे हमारी माननीय कुलपति महोदया ने बोला भी कि आपके जो इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं, जो आपके आउटकम्स हैं, आप तो है ही आउटकम एंड आउटरीच, तो जो आउटकम्स हैं उसको कंसोलिडेट करना है, उसको और अच्छे तरीके से समाज में लाना है। और अब हमारे पास तो एक्सपर्ट हैं ही डिजास्टर मैनेजमेंट के, तो हम उस डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से आगे समाज के प्रति उसको और अच्छे से निकाल के ला सकते हैं, वो हम उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है कृतिका का, कृतिका माथुर का भी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तरह खड़ी रही डायरेक्टर आउटरीच मैडम के साथ। मैडम मेरे को बोल रही थी कि आपने बहुत सारे रिसोर्स पर्सन के साथ कनेक्ट कराया, शंटी जी भी आ जाए, तो हम लोग सब प्लान कर रहे थे कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और जब इन्होंने बोला कि वैलिडिक्ट्री में कुछ होना चाहिए, तो एकदम से एक ही दिमाग में नाम आया, किसी तरीके से शंटी जी को हम यहाँ पे ला सकें। और शंटी जी आज पधारे हैं यहाँ पे हमारे बीच। तो कृतिका ने बहुत सपोर्ट दिया, आपकी आउटरीच एंड एक्सटेंशन टीम ने बहुत सपोर्ट दिया, डायरेक्टर आईटी हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि ये वो समय था जब आप सबको किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैसे एक दूसरे से आपको कनेक्ट में रखना है, और उसके लिए हमारी आईटी टीम ने बहुत सहयोग दिया, हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सहयोग दिया, और जितने भी जितने हमारे कर्मचारी और जितने हमारे यहाँ पे स्टाफ, जितने लोग रहे, उन सभी को धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम एक संपन्न हुआ आज, जो कि खाली किताबों के अंदर में या कागजों में संपन्न होकर सीमित नहीं रह गया। इसके आगे भी इसकी दिशा है, इसकी दिशा निर्देश हमें मिलेगी एक्सपर्ट से, शंटी जी के सपुत्र से, हमारी माननीय कुलपति महोदय से, और हमारे फैकल्टी और टीचर्स और डीन्स और एक्सपर्ट से, क्योंकि ये अंबेडकर विश्वविद्यालय एक अनोखा विश्वविद्यालय है, ये कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे सोच और विचार विमर्श और तर्क के ऊपर में कार्य होता है। तो जो रिपोर्ट आपकी आएगी डायरेक्टर आउटरीच एक्सटेंशन की तरफ से, इसको काइंडली पब्लिश करिए, सर्कुलेट करिए सभी के बीच में, और हम इसके आगे एक नए कदम के ऊपर में इससे साथ में सब मिलकर पुनः चलेंगे। तो पुनः सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस अंबेडकर विश्वविद्यालय के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आने के लिए। और धन्यवाद का मतलब ये नहीं है कि यहीं पे खत्म है, इस धन्यवाद का मतलब है एक नया कदम, नई पहल, जिसको आगे आपको अंबेडकर विश्वविद्यालय को लेकर चलना है। With all these words, I will again like to thank all of you, and especially to the Honorable Vice Chancellor, our Director, and the Chief Guest of the day, Shanti ji. Thank you very much. अच्छा